मैथ करवाएंगे। उसमें पहला टॉपिक मेरा होगा वेक्टर अलजेब्रा। मेरा एक चैनल है जिसमें आप जाएंगे तो मैंने एनडीए के लिए अलग से चैनल बना रखा है और आपको ये मदद करेगा। आप चैनल पे जो भी टॉपिक डाल रखे हैं वो आपको बहुत मदद करेंगे। हम एनडीए के सवाल जो पिछले सवाल पूछे गए हैं वी विल ऑल रिवाइज दोज वन। तो चैनल का नाम सरमाउंट एनडीए यू गो। जो भी एनडीए में एग्जाम देना चाहता है और वो चाहता है कि मैं घर बैठ के काम करूं, आप कोई कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक अवसर है। मेरा आज का सिंपल टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे वेक्टर करूंगा। वेक्टर के कम से कम आपको 10 सवाल मिलेंगे। 10 सवालों को आपने बिना कोई 10वीं 12वीं किसी की भी एग्जाम की जरूरत नहीं है कि आपने पहले पढ़ रखा है। मैं बेसिक से शुरू करके और आखिरी तक आऊंगा। आओ चलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। मेरा पहला वेक्टर अलजेब्रा का मतलब है आपको वेक्टर अलजेब्रा से रूबरू करवाते हैं। पहली बात ये वेक्टर अलजेब्रा। पहली बात वेक्टर और स्केलर में अंतर ये होता है कि वेक्टर ये मेरा एक सिंपल ए बी, ये ए बी इसके बीच में है, ये एक स्केलर है, सिर्फ इसका डिस्टेंस है। यदि मैं इसको एरो लगा देता हूं तो ये वेक्टर बन जाता है। ए बी वेक्टर का मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड भी हो और उसकी डायरेक्शन भी हो। तो स्केलर में होता है सिर्फ उसका एक ओनली द मैग्नीट्यूड। इसको हम कैसे लिखते हैं? हम ए से लेके बी तक लिखे हैं तो ये ए बी कहलाता है। ए बी, यदि ए बी है तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है। इसको हम किसी ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको ए से लिख सकते हैं, डिनोट ऐसे भी कर सकते हैं। यदि मैं ए बी को बी ए कहूँ तो बी ए उल्टा हो जाएगा, तो बी ए जो है इसका उल्टा है। बी ए का मतलब यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ए बी और माइनस बी ए का मतलब ये होता है कि उसका अपोजिट है। ए से लेके बी तक और बी से ए तक दोनों आपस में अपोजिट है, माइनस हो जाएगा। दोस्तों हमारे पहली बात ये है कि जो हमारा ये जो ये वेक्टर होता है इसको सम कैसे करते हैं, हाउ दे आर एडेड। इसको ऐड कैसे करते हैं, हाउ दे हैव बीन एडेड। तो एडिट करने के लिए एक ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स है, ट्रायंगल लॉ होता है। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स है। ए बी एक वेक्टर है, बी सी दूसरा वेक्टर है, तो इन दोनों का सम जो होगा वो हमेशा ए सी होगा। आप देखेंगे ए बी प्लस में बी सी प्लस में बी सी प्लस में मैं बराबर कर दूंगा, उल्टा जाएगा, ए सी के बराबर होगा। ए सी ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू दिस, ये वाला। मैं ऐसे लगाऊं, मान लो यहाँ पर ए सी है और प्लस में सी बी है, तो ये इकट्ठा एक टाइम है, तो दिस इज इक्वल टू ए बी। ऐसे करते हैं। मान लो ए सी प्लस में सी बी प्लस में बी डी, ये किसके बराबर होगा? अब हम क्या करेंगे, पहले ए सी सी को जोड़ेंगे, ए बी हो जाएगा, और ए बी के बाद हम बी डी को जोड़ेंगे, तो ये हमारा क्या आंसर आ गया? ये हमारा ए डी आंसर। ऐसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर से हम इसकी वेक्टर एडिशन करते हैं। तो हमारा पहला काम क्या है कि हम कैसे वेक्टर को कैसे लिखते हैं और वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। और हमने एक बात ही बताई, ए बी और बी ए में क्या अंतर होता है। ए बी और बी ए अपोजिट होते हैं, ए बी इज इक्वल टू माइनस में बी ए। ये बात हमारे पास है। मैं एक सवाल आपसे ये हमने कई बार सवाल पूछा हुआ है और एनडीए में सवाल भी आता है, एक बार सवाल आया भी हुआ है। ओके, मान लो ये मेरे पास एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के हमने इनको एक ऑर्डर में ऐसे कर रखा है, ए बी सी। ये हमने एक ऑर्डर में हमने इनको वेक्टर में डाल रखा है। वो कहता है कि बताओ ए बी क्या होगा इसके बराबर, कौन सा ट्रू होगा? ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए इज इक्वल टू 0 होगा, या ए बी माइनस में बी सी प्लस में सी ए इज इक्वल टू 0 होगा, या ए बी माइनस में बी सी माइनस सी बी प्लस में ए सी इज इक्वल टू 0 होगा, या ए बी प्लस बी सी और माइनस सी ए इसके बराबर होगा। आउट ऑफ विच वन इज द करेक्ट आंसर? दिस हैज बीन आस्क्ड। ये एनडीए में सवाल पूछा गया है कि इस प्रकार के सवाल ये पूछे गए कि हमारा ये इस तरह से हमारा एक ट्रायंगल में ए बी को दे रखा हो, बी सी एक ऑर्डर में दे रखा हो, तो विच वन इज द फॉलोइंग इज द करेक्ट वन। तो दोस्तों हमें पता है कि ए बी प्लस बी सी एक करेक्ट भी लिखना चाहिए था। ए बी प्लस में मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं ए सी लिख रहा हूँ यहाँ पर ए बी प्लस में बी सी
must be equal to what, must be equal to what, यहाँ पर मैं लिख दिया, यहाँ पर ये वाला इसके अपोजिट होना चाहिए, must be equal to what, AC। ये हमने अभी बताया कि ट्राइंगल लॉ बता रहा है AB प्लस BC मस्ट बी इक्वल टू AC। अब यहाँ पर AC की जगह मैं माइनस CA करूँगा, तो दोस्तों AB प्लस BC प्लस में CA must be equal to 0. So which one is correct? Answer is A is the correct. We have used a simple method. This question has been asked in 2018 or something like that, or it has been asked कि what out of the, when they are given one order, what is the angle. So first of all, the basic addition question is also asked. That is one part. The second concept, I go with the second concept. मैंने आपको जो बताया है, the first thing I told you what vector is, how vector is different than the scalar and how this is it. मेरा next one ये है कि हमारे पास एक वेक्टर है, एक पॉइंट A दे रखा हमारा यहाँ पर प्लेन में, एक पॉइंट यहाँ पर, और हम इनकी पोजीशन बताएं, तो इसको पोजीशन बताने के लिए हमने एक रेफरेंस पॉइंट देना होगा। किसी को हमने कोई पोजीशन बतानी है कि ये चीज़ कहाँ पर है, तो हमें दो बात बतानी पड़ेगी। मैं अपनी लोकेलिटी बताऊंगा कि वो चीज़, मेरा स्कूल कहाँ है, मेरे घर से स्कूल कहाँ, तो दो बातें बताऊंगा। मेरा कितनी दूर है, आई विल टेल हाउ फार इट इज एंड इन विच डायरेक्शन इट इज। दूरी तो यहाँ भी हो सकती है, दूरी यहाँ भी हो सकती है, दूरी यहाँ भी हो सकती है। तो दिस इज कॉल्ड पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। दिस इज कॉल्ड पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए is given equal to OA vector. This is equal to OA vector. And what is OB vector? This is OB vector is position vector of point B. Point B का जो है OB vector कहलाता है. Okay friend, here it is. Well, when O is A is the position vector of point A and B is the position vector of point B, then what is AB is equal to? What is AB is equal to? Now friends, OA plus AB must be equal to what? OB. Well, here it is. Then AB is equal to what? AB is equal to OB minus OA. Well, friend, here it is. OB minus OA. What is OB is equal to what? Position vector of point B minus my position vector of point A. Remember, AB is vector can be written in the form of position vectors. Like suppose I say what is PQ vector is equal to P. This is equal to position vector of Q minus my position vector of P. What is CD vector is equal to CD vector is equal to position vector of point D minus position vector of C. I hope you understood how we express a vector in terms of its starting point and point, and this is position vector of this. How we go to position vector of A and B. When you have got 2 points in the plane, how you write the vector AB? AB is equal to position vector of point B minus position vector. I will be using this concept very oftenly. I will be using, so kindly note down this point. Well, we have got another point here. Let's say this is the reference point. I said this is the point A. This is the position vector A. This is another one B. This is the position vector point. Well, I have got a point on any point C on this which divide this in the ratio m is to n. Then what is OC vector is equal to? This is a section formula which we have done in the coordinate geometry we have done. But don't worry whether you know the coordinate geometry or don't know, don't worry about it. But let's listen it how it can be. When this point divide this, then you write m into, this will be in terms of m into OB plus n into OA divided by m plus n. Remember, this is a section formula. आपने याद रखना. This is how you have to remember this point. Suppose I want this is a reference point. A is the position vector of A here. B is the position vector of B here, and this is the point. Well, if it divide the ratio 2:3, then what is the ON vector is equal to? What is ON vector? What is ON vector is equal to? ON vector will be equal to, friends, we write in terms of O and OB. This is equal to twice of OB. Well, I call it, I put the name as B, so this is equal to B. This is equal to, I said A, so let's A. So I say this is equal to twice of B plus 3 of A divided by 5.
Well, I got one. Let me tell. This is the point O here. This is 1A, and this means this is equal to A. When I say the position vector of point is B, that means this is a B here. Well, I make a point M here, midpoint of this. What is the position vector of midpoint of what is OM is equal to? What is OM is equal? Let's use the section formula. Let's use the section formula. What is OM is equal to? Well, this divide is the ratio 1:1. So friend, 1 into B into 1 into A is equal to A plus B divided by 2. This is here. So we have this section formula will be very helpful to us when we talk about this. Suppose we have got, let me just take one example. Well, I'll take the one example and let's see what is the, suppose I am given, if AB is equal to what, AB is equal to what, BD, and position vector of point A, OA, if this is equal to A vector, and OB vector, this position vector of point B is equal to B, then what is the position vector of point D? What is the position vector of point D? That's it. That's the question. Friend, I just say what is OB is equal, what is AB is equal to position vector of point B minus position vector of point A must be equal to position vector of point D and minus position vector of point B. Here, this is equal to B, this is equal to A, this we want to find out, and this is equal to B. So position vector of D can be given is equal to 2B come minus A. That's here you can do. This is, we can do this question like this. We have got, this is the question. Now this is a way how we write down, how we find this. Let me do the next one question. Here I go. Before I go a question, I want to tell about one property of regular hexagon. Because the regular hexagon has a question in NDA, and therefore there are questions based on a regular hexagon, pentagon and quadrilateral. Therefore, let me first of all tell what is regular hexagon properties, if you don't know. Well friends, if I got this AB and CD, EF is a hexagon here, is a regular hexagon. What is a regular hexagon? Regular hexagon means all sides are equal. All sides are equal. And all these distances from here, they are all equal. They make equal angle here. This is a 6, they 60, 60, 60. They are all like that. This is 180. This is 180. This is parallel to this. This is parallel to this. This is a parallelogram. Therefore, this side is equal to this side. This is also parallelogram. Therefore, this side is equal to this side. So therefore, this side and this side double of this side is double of this is equal to this equal to this vector is equal, this parallel to this. So therefore, here it is. In a hexagon, what I want to say, in a regular hexagon, if I got the question like this, if we have got the regular hexagon ABCD, let me put ABCD is a regular hexagon. This is A, B, C, D. This is regular hexagon A, B, C, D, E, F. Okay. My question is, if A and B are the two sides of the hexagon A and B, suppose this is side A and this side is B. Suppose these two sides of the regular conjective side of regular hexagon, then what is, I said, let me ask, what is the CE then? What is CE? Suppose this question. This is what is CE. What is CE? Well, if this angle, this side is equal to A, so therefore this side is also equal to A because they are equal to this and they are parallel. They are parallel. I need to find this CD. What is CD is equal to? Now, when I CD, I talk about this is equal to what? This is mine, this CD, I'll part this one. This side is equal to A, this side is equal to B. So therefore, this is equal to A plus B. This is equal to A plus B. Okay, this is A plus B.
Well, when I join this and this I join this is a B, then I said this will twice of this is twice of B, this is twice of B. What is this equal to? What is this equal to? What is this equal to? This one, let's say this equal to this 2B plus my DC, which I want to find, is equal to A plus B. Therefore, DC is equal to what? A plus B minus my 2B. Oh friend, I got A minus my B. Well, here it is. If I got A minus B, then friend, this plus this must be equal to EC. So what is EC is equal to A plus A minus my B. So this is equal to 2A minus my B. But my question is, what is CE? What is CE is equal to? So CE is equal to, make it opposite, B minus my 2A. That's here it is, B minus 2A. This it can be done. So this question is like that to be asked. Okay, let me ask one more question to you that will I want to find out the one more question. We have got a quadrilateral, and this quadrilateral, so let me take parallelogram. Let me take a parallelogram. Okay, this is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Alright, this is D is any point. I don't know where this is D and D. Let me take the position vector of this point is A, position vector of this point B, position vector of this point C, and position vector of this is D. Well, I want to know this is taken from OA, OB, OC, OD. I don't know what is this. There is another point, एक point O बाहर है जहाँ से reference ले रखा है OA, OB, OB, this one. Well, friend, I want to know this. What is OA plus OB plus OC plus OD is equal to, let me say that there are two diagonals, they meet at a point, and this point is P. Okay, this is equal to how many P's? Choices are 4 OP, only OP, 6 OP, and 8 OP. What this is equal to? My question is, what here OP is also O is a point of reference. Well, here it is. Well, this P, you know, is the midpoint of this and this. If this is a midpoint, therefore OP can be written as OA, that is A, plus OC divided by 2. What is this? Also midpoint of this. Therefore, OP is also equal to what? OB plus OD. Well, friend, if I multiply here, this is divided by 2. Multiply this 2 and 2. 4 OP is equal to OA plus OB plus OC. This is equal to 4 OP. This is here we go. That here we can do such questions कि हमारे पास यहाँ पर दे रखा हो, so you can always find out this type of question. I am coming again one question based on the centroid of a triangle. I will find out the position vector of a centroid of a triangle when the vertices के हमारे पास ये ट्राइंगल है और इसके A वर्टिसेस है, इसका पोजीशन वेक्टर A है, B का पोजीशन वेक्टर B है, C का पोजीशन वेक्टर C है. मुझे एक मीडियन यहाँ ड्रॉ की गई. मीडियन पहले बताओ what is the position vector, what is AD vector is equal to. My first question, what is AD vector is equal to in terms of ABC? What is AD vector is equal to? AD vector, D here is a median, it divides in equal part, therefore position vector of D is equal to B plus C divided by 2. And what is AD is equal to, what is AD? AD is equal to position vector of D minus position vector of A. Well, we have learned D ka B plus C divided by 2 minus A. So this is AD minus 2A divided by 2. This is, we can find. My first question to you,
no issue. Okay, I want to find there is a G, the median, the centroid here. You know centroid, divide this in the ratio 2:1. All the medians are concurrent, they meet at a point and that point is known as centroid. I want to know find the position vector of centroid. This I'll discuss this, and after this I'll discuss this question in my next video tomorrow. I'll be talking to you the next video. Tomorrow I'll be doing question based on this. Tomorrow I'll talking about it. This is here. Tomorrow you'll find the median. This is totally. So what is the first of all G? G divide this one. So G here divide in the ratio of this. So position vector of point G is equal to 2 into this twice of the position vector of D. Okay, that is called OD. That is called OD, and plus position vector of A divided by 3. Well, what is the position vector of D is equal to? I said D is the midpoint, therefore this is equal to B plus my C divided by 2 plus my A divided by 3. So I found A plus B plus my C is equal divided by. This is the position vector of. This position vector of a centroid is given by A plus B plus C. So friend, I'll be doing 10 questions tomorrow on basis on this. My next video will be there. I'll be putting on Facebook. Kindly go through, and here and also my channel on Surmount NDA. Kindly go through and find this question. They're basically very simple question. Basic thing, you know the how the vectors are added, what is the position vector, how AB is equal to position vector of B minus A. Kindly write down C, and I'll be doing question based on this, and I'll extend further the product of two vectors. Till then, okay, thank you so much.